So good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we're gonna continue our talk on stock market. And we have been talking about some of the most important terminologies, or the words, or the technical jargons being used in stock market in depth. So in the previous session, we tried to understand the difference between trading and investment. We tried to understand the concept of the short-term capital gains and long-term capital gains. Also, we try to understand the concept of your types of investment, your short-term investment, long-term investment, types of trading as well. Like where we talked about was scalping, like which was basically into minutes and seconds and all. And the other thing was the swing trading, which was based on the volatility in the market. And we also talked about the VIX indicator, which is nothing but the volatility index indicator. So, like all these things we tried to discuss, and we also talked about the difference between fundamental and technical analysis. Okay. For all of those who are interested to know more about fundamental and technical analysis, can go through my YouTube live series, and they can get to know a lot there. Okay. So in this session, I'm going to talk about trading and investing a bit further. Like for example, see, in order to trade or to invest on your behalf, you have to open a demat account, right? Until and unless you have a demat account, you don't have a demat account, you cannot trade, right? Until and unless you don't have a demat account, you cannot trade, right? So demat account is mandatory. Nowadays, a large number of discount brokers have come in. For example, was Zerodha, Upstocks, Grey, you have the Grow, you have the Angel Broking, you have 5paisa. All these have come up, and these are called the discount brokers. Because earlier we have the ICICI Securities, HDFC Securities, Axis Securities. So these are also there. And those are called the traditional brokers because they used to charge huge commission. And because of that, like nowadays, people have shifted to these discount brokers, your Zerodha Stocks, Grow, 5paisa, and Angel Broking and all. Because they help you to open your demat account either like free of cost or at a very low fee. And there is no maintenance charges as well. Okay. So that is one thing. So like for example, you have your demat account open and you go to the window of Zerodha. So in the window of Zerodha, you'll have two options. One would be like when you want to buy or sell. One would be CNC and the other would be MIS. One would be the CNC and the other would be the MIS. So what exactly is the difference between the two? Let's understand. And that is why I had explained you the concept of trading and investment before, so that you understand CNC and MIC much easily. So when you talk about CNC, CNC stands for your cash and carry. And when you talk about your MIS, it's a margin intraday square off. Okay. CNC is your cash and carry, and MIS is your margin intraday square off. Okay. Yeah. So what happens in cash and carry? Cash and carry is used for the purpose of investments. Okay. And MIS is used for the purpose of trading. अब कैश एंड कैरी का मतलब क्या है कि सिक्योरिटीज खरीदी, कैश पे करा एंड कैरी करके ले गया इन द सिंपलर सेंस. लाइक फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, तो कैश एंड कैरी अपने पास रखा, कि मतलब कि पैसा दिया एंड सिक्योरिटीज अपने पास रख ली. बट इन मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, you have your purpose of trading, that is you have to square off your positions like within the same day. आज अगर खरीदा है, if you have bought the stock at 9:15 a.m., you have to compulsorily sell at 3:30 p.m. और अगर सेल करना भूल गए तो ब्रोकर वुड ऑटोमेटिकली सेल इट, एंड दैट इज द रूल. और अगर बेचा है, इफ यू हैव शॉर्ट सेलिंग करी है, देन यू हैव टू बाय इट बाय 3:30 p.m. अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है मैंने बोल दिया वर्ड, अब शॉर्ट सेलिंग भी समझाना पड़ेगा, राइट? सो सी, like what happens in trading, like when we are anticipating that the price would rise in future, ठीक है, प्राइस हमको लग रहा है कि आगे जाके बढ़ेगा,
ये मैं शॉर्ट सेलिंग समझा रहा हूँ। अगर प्राइस लगेगा एंड वो अभी शेयर प्राइस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्राडे, आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, ठीक है। अगर करंट प्राइस आज 100 रुपीज चल रहा है एंड इफ आई थिंक like within the same day till 3:30 p.m. around the price will go up like maybe like 120, so I will buy this stock at 100 rupees and I will sell it at like 120 rupees, right? बाय करा मैंने like 100 रुपीज पे एंड सेल कर दूंगा 120 रुपीज पे। दैट इज योर लाइक नॉर्मल बाइंग द स्टॉक, ठीक है। बट एंड लाइक वी ऑल्सो कॉल इट एज योर लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बोलते हैं। ये मतलब इन केस ऑफ ऑप्शन ज्यादा चलता है वर्ड, बट ट्रेडिंग में भी यू कैन से योर लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग मतलब you went long on the stock, that is you had the perception or you had the belief that the stock price would rise in future। जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है यू गोट लॉन्ग ऑन दैट स्टॉक, ठीक है। बाकी वो कॉल एंड फ्यूचर में ज्यादा वर्ड यूज होता है, ठीक है, बट ट्रेडिंग में भी लाइक यू कैन यूज इट लॉन्ग ऑन दैट स्टॉक। एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब अब खरीद लिया है, नाउ यू हैव टू अनवाइंड योर पोजिशन, दैट इज यू हैव टू सेल दैट स्टॉक। एंड दैट वाज द, अगर प्राइस बढ़ेगा आगे जाके, अब अगर 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है एंड दिस इज द सिनारियो नंबर 2 एंड दिस वाज द सिनारियो नंबर 1 और फर्स्ट वन। 100 का खरीदा है एंड हमको लगता है अभी लाइक खरीदा नहीं है, ठीक है, 100 का प्राइस चल रहा है एंड हमको लगता है स्टॉक प्राइस आगे जाके गिरेगा, द स्टॉक प्राइस वुड फॉल एंड नॉट राइज, ओके। इन द फर्स्ट केस वी थॉट दैट द स्टॉक प्राइस वुड राइज, तो हमको लगा कि 100 का लाइक 120 हो जाएगा अराउंड 3:30 PM तक। We bought the stock at 100 rupees and earned a profit and made a profit and sold at 120 rupees. We went long on the stock and then we unwinded our long position, the long unwinding. अब हमको लग रहा है प्राइस गिरने वाला है, तो we cannot go for long position. We'll go for shorting, short position. Around 9:15 the price was 100. Around 9:30 मैं सोचा चलो भाई 100 रुपीज का अपना है एंड प्राइस अगर नीचे गिर जाएगा, so if the anticipation is price rise then go for long, if the anticipation is price fall then go for short। 100 का हमने बेच दिया, खरीदा नहीं, बेच दिया, we sold it for how much, 100 rupees and we got 100 rupees in our pocket। जब बेचेंगे तो पैसा आएगा। अब क्वेश्चन आएगा जब स्टॉक है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? we borrow the stock from someone and that someone is not known to us, okay, the broker arranges that deals within seconds and that is how efficient the stock market system is, ठीक है। उसके शेयर्स ले लेंगे, मतलब कि करते हैं, लाइक हम उसके शेयर बोरो करके हम बेच देंगे, ठीक है। वी कैन अर्न द प्रॉफिट ऑन इट, हम प्रॉफिट उस पर अर्न कर सकते हैं, बट वो शेयर हमको लाइक वापस करना पड़ेगा। मान लो 100 पे हमने बेचा, बिकॉज जहाँ पे हम शेयर खरीद रहे हैं तो लाइक वी आर परचेजिंग इट विद आवर ओन मनी, बट यहाँ पे वी आर लाइक नॉट परचेजिंग विद आवर ओन मनी, वी आर सेलिंग इट, मतलब किसी और का बोरो करके। एंड 90 पे मतलब कि 3:30 पे लाइक 90 पे मार्केट आ गई, तो 9:30 पे बाय द, सॉरी 3:30 पे like buy the stock, at 9:15 you sold the stock, the borrowed stock from someone at 100 rupees, बेचा तो पैसा आया। 3:30 पे you bought back that stock because बेचा है तो खरीदना पड़ेगा, अपनी अपनी लाइक पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 100 माइनस 90, 10 रुपीज तुम अपने पास रखोगे और जब 100 रुपीज जब खरीद लोगे, जब शेयर वापस वापस like you'll have to return that to broker or to that person from whom like you have borrowed। and अगर बेच के खरीदा है तो we call it as short covering, short कर दिया, but now you have to like cover your short position, that is short covering, okay। so I believe the concept of long unwinding or long shorting or short covering is clear, ठीक है। तो अब CNC हमको आ गया समझ, MIS की बात करेंगे because MIS is further like divided into two parts। MIS, margin intraday square off, it is into two parts। one is your cover order, तुम लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हो उसको, लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हो इन्वेस्टिंग, बट इंट्राडे में यूज ज्यादा होता है ब्रैकेट ऑर्डर।
So what happens in a cover order? You are buying the stock, you have one leg, इसको like हम two legged बोलते हैं, इसको हम three legged बोलते हैं. क्यों? फर्स्ट लेग इज इनिशियल प्राइस, पहला मतलब कि जिस पे तुमने खरीदा या तुम खरीदना चाहते हो, लाइक यू बॉट द इनिशियल प्राइस 100 रुपीज पे मानो खरीदा. एंड द सेकेंड लेग इज योर स्टॉप लॉस. मान लो कि 90 नहीं मतलब कि 75 पे लगा दिया स्टॉप लॉस. अब स्टॉप लॉस क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव परचेज अ शेयर फॉर 100 रुपीज एंड मुझको लगता है बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई हैव परचेज द शेयर आई वुड ऑलवेज वांट द शेयर प्राइस टू राइज बिकॉज नो वन हैज एन एक्सपेक्टेशन कि मैं खरीदूं एंड द शेयर प्राइस वुड फॉल. ठीक है, 100 रुपीज का खरीदा एंड मुझे लग रहा है कि मैं लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ. अगर 90 पे आ गया, ठीक है, तो मुझे लगता है चलो अभी 10 रुपीज का लॉस चल रहा है एंड क्या पता कि मार्केट प्राइस ऊपर बढ़ जाए, तो अब तो लाइक 10 रुपीज आई कैन बेयर द लॉस. फिर 80 पे आ गया, मुझे लगा अभी चलो 20 रुपए ही हुए हैं एंड क्या पता कि आगे बढ़ जाए, तो अब तो लाइक 20 रुपीज आई कैन बेयर द लॉस. बट अगर मुझे लगा स्टॉक प्राइस इफ इट कम्स फ्रॉम 100 to 75 आई कैन नॉट बेयर द लॉस ऑफ 25 रुपीज. आई कैन जस्ट बेयर द लॉस टिल 24 रुपीज एंड नॉट टिल 25 रुपीज. तो अगर 75 पे हिट हुआ, अगर ट्रिगर आया, माई स्टॉक वुड बी ऑटोमेटिकली सोल्ड ऑफ इन द मार्केट. एंड क्या पता कि 75 के बाद वो 70 पे आने वाला हो, 60 पे आने वाला हो, 50 पे आने वाला हो. इन दैट केस 50% पूरा स्टॉक गिर जाता है. तो उससे बेटर है कि 75 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया. ओके, तो इन योर कवर ऑर्डर यू हैव टू थिंग्स, वन इज द स्टॉप लॉस एंड वन इज द initial price. But like what happens in the bracket order? In the bracket order you have three legs. One is the buy, जिस पे खरीदा है, एक stop loss, and the other is the target. Target is just the opposite of stop loss. खरीदा 100 पे, स्टॉप लॉस 75 एंड टारगेट 150. अब टारगेट का मतलब क्या है? इफ आई हैव परचेज द स्टॉक एंड आई फील दैट द स्टॉक विल रीच अप टू मैक्सिमम ऑफ लाइक 150 एंड 150 के बाद स्टॉक प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो आई कैन सेट माई टारगेट एट 150. जैसे ही स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कम्स एट 150, माई स्टॉक वुड बी ऑटोमेटिकली सोल्ड ऑफ इन द मार्केट एंड आई वुड अर्न 50 रुपीज. राइट, मुझे मैनुअली वापस अपना मतलब कि जीरोधा अप स्टॉक से ग्रो का अकाउंट मतलब कि वापस नहीं खोलना पड़ेगा एंड मुझे मतलब कि सेल नहीं करना पड़ेगा. विल ऑटोमेटिकली बी सेल्ड सोल्ड. और अगर 150 पे आया ही नहीं तो कभी ये ट्रिगर होगा ही नहीं. सिमिलरली अगर 75 पे आया नहीं तो कभी भी लाइक स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ही नहीं. ओके, सो दैट इज इन द मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, योर कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर. ठीक है, वन एक सेपरेट ऑर्डर होता है दैट इज इन योर सीएनसी में, बेसिकली दैट इज योर एएमओ. एएमओ एएमओ इज योर आफ्टर मार्केट ऑर्डर. इसका मतलब ये है अगर 330 पे मार्केट क्लोज हो गई, यू कैन स्टिल प्लेस द ऑर्डर, बट दैट ऑर्डर वुड बी एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट डे +1 में 9:15 PM. और अगर उसका क्लोजिंग प्राइस मान लो 400 रुपीज है, तो इट डजेंट मीन कि 400 रुपीज पे तुमको मिलेगा, बिकॉज मॉर्निंग में 9:08 से लेकर 9:15 तक यू हैव द प्री ट्रेडिंग सेशन. वहां पे डिमांड एंड सप्लाई से पता चल जाता है कि शेयर की ओपनिंग प्राइस कितनी करनी है. अगर 400 से ऊपर पे ओपन हुआ, सो दैट वुड बी अ गैप अप ओपनिंग बिकॉज इट हैज ओपन एट अ प्राइस मोर देन द प्रीवियस डेज क्लोज. और अगर 400 से नीचे पर ओपन हुआ, दैट्स अ गैप डाउन ओपनिंग, that has opened at a price like which is less than the previous day's close. तो 9:08 to 9:15 सब मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग की ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, तो डिमांड पता चल जाती है. डिमांड ज्यादा हुई तो 415 पे प्लेस होगा एंड हो सकता है कि 415 पे प्लेस होकर वो वापस मतलब कि 400 पे गिर जाए एंड फिर लॉस भी हो सकता है. अगर डिमांड नहीं हुई तो हो सकता है कि पिछले दिन 400 पे प्लेस करा था बट ऑर्डर लाइक 380 पे प्लेस हो गया, तो आगे जाके प्राइस बढ़ने का चांस हो जाएगा. So the aftermarket order is something you can place the order like even when the market closes. Okay. So we tried to discuss about CNC, cash and carry, your margin intraday square off, short selling, short covering, your long and long unwinding. We talked about the bracket order, cover order, and the aftermarket order.
In the next session, I'll be coming up with more such important terms for you.